Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at home. Welcome again to my class. We were learning chapter number 6, Force, Work and Energy. In this chapter, we have learned about force. We have learned different examples of force. Now, today, we will read different types of force. There are different types of force. अलग अलग तरह के force होते हैं. Today we will read the types of force. So first one is given muscular force. There are various types of force. I will tell you the names of the force. First one is muscular force. Second one is mechanical force. Third one is elastic force. Fourth one is gravitational force. Fifth one is frictional force. We will read one by one the types of force. First of all, we will learn about the muscular force. What is muscular force? Muscular force is the force exerted by the muscles of our body. हमारी जो मसल्स से जो फोर्स एक्सर्ट होता है, हम जिससे काम करते हैं, जैसे कोई भी जो हम काम करते हैं जिसमें हमारे हैंड्स और लेग्स जिसमें वर्क करते हैं, बॉडी वर्क करती है, तो इसमें हमारी मसल्स जो है वो उस फोर्स को अप्लाई करते हैं. मसल्स जो है वो उस फोर्स में भाग लेते हैं, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. वी आर सेइंग इट मस्कुलर फोर्स. देयर आर various examples of muscular force in our daily life. You can see here a picture. A boy is carrying a bag. ये जो boy है ये एक बैग को कैरी कर रहा है. तो क्या कर रहा है? He is lifting a weight. क्या कर रहा है? वेट को उठा रहा है. तो किससे उठा रहा है? हैंड से उठा रहा है. ही इज लिफ्टिंग इट विथ हैंड्स. सो जो वेट वो उठा रहा है उसमें कौन हेल्प कर रहा है? मसल्स, है ना. हैंड से उठा रहा है तो मसल्स, उसमें एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. हियर you can see another picture. A boy is doing push-ups on the floor. Can you see it? Yes. So here he is applying a muscular force while doing push-up. जब वो push-up कर रहा है तो वो एक muscular force को apply कर रहा है ना. There are various examples of muscular force. Here you can see typing on a keyboard requires a muscular force. जब आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तो क्या होता है? आप एक फोर्स अप्लाई करते हो. कौन अप्लाई करता है? फिंगर्स अप्लाई करती है ना. फिंगर से ही आप टाइप करते हो. यू आर टाइपिंग विथ योर फिंगर्स ओनली. सो यू आर अप्लाइंग ए फोर्स विच इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स while typing on a keyboard. Then next one, writing on a paper. You can see here the picture of a boy. He is writing on a paper. So here a force is applied which is called muscular force. जिसमें वो क्या यूज कर रहा है? He is using his fingers, है ना. फिंगर्स ही आप उसमें लैपटॉप में भी आप यूज करते हो कीपैड पे टाइप करने के लिए. मस्कुलर फोर्स इसमें आप किस में अप्लाई हो रहा है? हैंड्स में, फिंगर्स पे अप्लाई हो रहा है. नाउ यू कैन सी द बॉय हियर इज brushing his teeth. Here also he is applying
a force which is called muscular force while brushing teeth. Okay, next one, the example, athlete is running in a race. You can see here the picture of an athlete. He is running. अब जो मस्कुलर फोर्स है वो किस पे अप्लाई हो रहा है? लेग्स से, है ना? सो ही इज अप्लाइंग ए मस्कुलर फोर्स वाइल रनिंग इन ए रेस. अब लेग्स का यूज कर रहा है, तो लेग्स जो मस्कुलर फोर्स होता है उसमें बॉडी पार्ट्स का यूज होता है, जैसे हैंड्स और लेग्स का. जो फोर्स होता है वो हैंड्स और लेग्स पर ही मसल्स जो है वो अप्लाई करते हैं, है ना? तो इस फोर्स को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. सो हियर यू कैन सी एथलीट इज ऑल्सो अप्लाइंग ए मस्कुलर फोर्स वाइल रनिंग. देन नेक्स्ट वन, नीडिंग ए डव requires a muscular force. You have seen at your home that your mama, है ना, जब आपकी मम्मी जो है वो आटा गूंथती हैं, then she is applying, किससे गूंथती हैं आटा? हैंड से, है ना? सो नीड करती हैं आटे को, then she is applying a force which is called muscular force. क्या यूज करते हैं आटा गूंथने में? हैंड्स का यूज करते हैं. देन इट इज ए मस्कुलर फोर्स. नेक्स्ट वन, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन. जब आप एक नींबू के टुकड़े को जब आप निचोड़ते हो, स्क्वीज करते हो, देन ऑल्सो यू आर अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स विथ योर हैंड्स. ओके. देन लिफ्टिंग ए बकेट ऑफ वाटर. जब आप पानी से भरी भारी बाल्टी को उठाते हो, देन ऑल्सो यू आर अप्लाइंग ए मस्कुलर फोर्स. बाल्टी किससे उठाते हो? आप हैंड से उठाते हो. तो हैंड से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स हो जाएगा, है ना? सो व्हाइल लिफ्टिंग ए बकेट ऑफ वाटर यू आर अप्लाइंग ए मस्कुलर फोर्स. नेक्स्ट वन, व्हेन you can see here is a girl, she is doing a martial art. While doing martial art also requires a muscular force. अब muscular force martial art में जो हो रहा है अप्लाई, वो किसके थ्रू हो रहा है? हैंड्स और लेग्स के, दोनों मूव करते हैं. आपको पता है जब कराटे करते हैं तो दोनों हैंड्स और लेग्स मूव करते हैं. सो यू आर अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स while doing martial art. Here you can see a picture in which a man is riding a bicycle. While riding a bicycle, you are pushing the pedal with legs. So, you are applying a muscular force. आप कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हो? जब आप बाइसिकल चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तब आप पेडल्स पे लेग्स से पुश करते हो, है ना? तो फोर्स अप्लाई करते हो. वो फोर्स कौन सा फोर्स कहलाता है? इट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स टू राइड द बाइसिकल. वी हैव लर्न अबाउट स्क्वीजिंग ए लेमन. लेमन के बारे में हमने पढ़ा है. स्पॉन्ज. नाउ वी विल रीड अबाउट स्पॉन्ज. स्क्वीजिंग ए स्पॉन्ज रिक्वायर्स ए मस्कुलर फोर्स. स्पॉन्ज पता है, जो फोम का टुकड़ा होता है, फोम होता है, उसके छोटे छोटे पीसेस आप ले लो. एक पीस यू कैन टेक ए पीस. देन व्हेन यू विल डिप इट इन वाटर, द स्पंज विल अब्सॉर्ब वाटर. देन यू विल स्क्वीज इट विथ योर हैंड. जब आप आपके हाथ से उसको निचोड़ोगे, स्क्वीज करोगे, देन यू आर अप्लाइंग ए फोर्स विथ योर हैंड्स. इट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. जब आप उसको स्क्वीज करोगे तो उसमें से क्या निकल जाएगा? पानी वापस बाहर आ जाएगा, पानी वापस निकल जाएगा, है ना? जैसे आप कपड़े निचोड़ते हो. अंडरस्टूड यू? व्हेन यू आर स्क्वीजिंग द क्लोथ्स, यू आर अप्लाइंग ए फोर्स विच इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. जब आप कपड़े निचोड़ते हो, आप दोनों हाथों से उसको निचोड़ते हो. यू आर यूजिंग बोथ योर हैंड्स. देन यू आर अप्लाइंग a muscular force with your hands. Next one, walking up on stairs. जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो, कैसे चढ़ते हो? किससे चढ़ते हो? लेग्स से चढ़ते हो, है ना? You are walking
on stairs with your legs, then you are applying a muscular force. Your legs, है ना, legs से चढ़ते हो. We have learned that muscular force is the force applied by the parts of the body like hands and legs. Okay. So, when you are walking up on the stairs, you are applying a muscular force with your legs. Next one. Chewing of food requires a muscular force. जब आप खाना चबाते हो, then also you are applying a muscular force. जब आप chew करते हो, जब आप खाना चबाते हो, then also you are applying a muscular force to chew this food. Here you can see a picture of a girl who is pushing the trolley, shopping trolley. Okay, you are also going to the shopping malls, then you are carrying this shopping trolley with you. Then when you are pushing it, you are applying a force. Which force you are applying? You are applying muscular force with your hands. किससे आप उसको पुश करते हो? शॉपिंग ट्रॉली को किससे आप पुश करते हो? यू आर पुशिंग विथ योर हैंड्स. सो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स विच इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स विथ योर हैंड्स. देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स. व्हेन यू आर पुशिंग ए टेबल, देन यू आर अप्लाइंग ए फोर्स विथ योर हैंड्स. Okay, when you are kicking a ball, then you are applying a force with your legs. Okay, when you are hitting a ball with a bat, then you are applying a force which is called muscular force with your hands. Okay, now here you can see a picture of a man who is doing weightlifting. In this weightlifting, what you are seeing, किससे वो weight को उठा रहा है? Hand से उठा रहा है. Then he is applying a force which is called muscular force. Okay. With then what type of force he is applying here? He is applying a force called muscular force with his hands. So, I hope you all have understood the types of force, in which first one we have learned about muscular force. Once more, we will learn what is muscular force. So, muscular force is the force which is exerted by the muscles of our body. Okay, in which we use hands and legs. Sometimes we are using full body in workouts, है ना? So when you are applying a force on anything, then you call it muscular force. Here we have given you various examples of muscular force. In short, we will see the pictures of the muscular force once again. First one is, the boy is lifting a bag. Okay, in this bag you can assume that there is a weight. So here a boy lifting a bag is an example of muscular force. वजन को उठाना आप किसका यूज करते हो? You are using your hand. So you are applying a force called muscular force. Doing push-ups also requires muscular force. You are applying here a force which is called muscular force. Then typing in a keyboard, you are typing with your fingers, then you are applying a muscular force while typing on a keyboard. Then while you are writing on a paper, then also you are applying a muscular force. Brushing your teeth, here also you are applying a force called muscular force. You are using here your hands. Next one,
athlete while running in a race, he is also applying a force called muscular force. Here he is using his body part called legs. The next one is kneading a dough with hands, है ना. कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं जब आप आटा गूंथते हैं? देन यू आर अप्लाइंग ए फोर्स विथ योर हैंड्स विच इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. देन स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन, you are applying a force called muscular force. While squeezing a lemon, you are using your hand. Lifting weights or lifting a bucket of water, भारी सामान उठाते हैं जब आप, या पानी की आप बाल्टी उठाते हैं, then also you are applying muscular force. While doing martial art, you are also applying your force. You are using your hands and legs. You are using your body parts. So it is a type of muscular force you are applying doing martial art. While using while riding a bicycle. While you are riding a bicycle, you are pushing the pedals of the bicycle with your legs. Then also you are applying a force called muscular force. Squeezing a sponge. When you are squeezing, आप जब एक स्पंज को निचोड़ते हो, then also you are using your hands. Here also you are applying a force called muscular force. Then walking on stairs. Walking on stairs, you are using your legs. Then you are applying a force called muscular force. While chewing food, you are applying a force to chew the food with your mouth. Then you are using teeth. You are applying a force while using teeth. It is the force called muscular force. While using shopping trolley, you are pushing it with your hands. Then you are applying a force with your hands, which is called muscular force. While weightlifting, okay, he is also applying a force with his hand. He is lifting the weight with his hands. So he is applying a force known as muscular force with his hands. Okay, I hope you all have understood the muscular force very well now. Okay, now thank you all of you.